Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and together we are doing book 7 and here this is your English grammar book and the name of your book is English Grammar Plus Skills and Least Workbook. So children, today the chapter that we are going to do is chapter number 6 of your book and the name of the chapter is Pronouns. So let's start with the chapter. You have learned that words that take the place of noun are called pronouns. So हमने पढ़ा है कि वो words जो noun की place पे use होते हैं उन्हें हम pronoun कहते हैं. So here some kinds of pronouns are given in this chapter. कुछ kinds of pronoun दिए गए हैं. The first one is personal pronoun, possessive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, reflexive pronoun, distributive pronoun, indefinite pronoun, relative pronoun, emphasizing pronoun. So first topic that we are going to learn is personal pronoun. A personal pronoun is a pronoun that takes the place of a person or thing are called personal pronoun. So personal pronoun क्या होते हैं? वो pronoun होते हैं जो किसी person, specific person या फिर thing के लिए use किया जाता है उन्हें personal pronoun कहते हैं. Since personal pronouns are used in the place of noun, they must be of the same number, gender and person as the nouns they stand for. So ये इसके जो number होता है वो भी same होना चाहिए जितने की यहाँ पे person या फिर thing है. We use personal pronoun depending upon. So personal pronoun को हम use करते हैं क्या क्या चीजें इस पे depend करती हैं. First is the number. Singular or plural. So personal pronoun को लगाने से पहले we should look at the number. Number क्या है? Singular है या फिर plural है. For example, the children went to a party. They enjoyed it. Next, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे children means बहुत सारे बच्चे हैं तो हमने यहाँ पे they को use किया है. उनके लिए they को use किया है. Next is gender, male, female और plural. महिमा इज इन द पूल. महिमा एक गर्ल है तो उसके लिए हमने यहाँ पे she यूज किया है. She loves swimming. तनिष्क इज अ गुड बॉय. He always obeys his parents. अब तनिष्क एक बॉय है इसलिए हमने यहाँ पे he यूज किया है. नेक्स्ट इज पर्सन. द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और द थर्ड पर्सन. तो तीनों में से कौन सा पर्सन है? वी हैव टू लुक एट दैट. सो आई टोल्ड यू नॉट टू टेल हर द सीक्रेट. अब यहाँ पे आई को हमने यूज किया है क्योंकि यहाँ फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है. खुद के लिए हमने आई यूज किया है. दे अग्रीड टू मीट अस एट 8 AM. दे मीन्स वो जो सामने जो लोग हैं उनकी बात हो रही है कि वो हमसे मिलना चाहते हैं 8 AM. नेक्स्ट इज केस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, गौरव इज अ गुड स्टूडेंट. ही इज ऑलवेज गुड इन स्पोर्ट्स. सो अब यहाँ पे गौरव की बात हो रही है. गौरव इज अ बॉय तो इसके लिए हमने ही यूज किया है. जैन गेव मी द बुक. अब यहाँ पे मी मीन्स मैं अपने लिए बात कर रही हूँ. So अपने लिए हमने यहाँ पे me use किया है. So these are the some of the pronouns that we have used. Now choose suitable pronouns and fill in the blanks with the following sentences. So here dash have already discussed the matter. So यहाँ पे my teacher and I, me and my teacher, I and my teacher, my teacher and me. So here what we have to use? So here we are going to use me and my teacher have already discussed the matter. I think Dash will make a good team for the quiz. So you and me, I and you, me and you and I. So here you and I think you and me will make a good team for the quiz. So children, like we have done the 2 questions here, you have to complete the rest of the questions. Now, next pronoun that we are going to learn about is possessive pronoun. Possessive pronoun क्या होते हैं? वो pronoun होते हैं जो किसी चीज का possession बताते हैं, belonging बताते हैं. So pronoun that show possession are called possessive pronoun. जैसे कि for example, the chair is mine. chair किसकी? मेरी है. तो वो जो thing जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किसके समान है उसके बारे में हमें बताना है. So यहाँ पे इसलिए हमने mine यूज किया कि मेरा है. Those book are theirs. उनका है. So मेरा, तुम्हारा, इनका, उनका. These all are possessive pronoun जो किसी के belonging के बारे में बताते हैं. The highlighted words show possession or belonging.
तो जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ये पोजीशन बता रहे हैं या फिर बिलोंगिंग हमें बता रहे हैं. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट पर्सनल और पॉजिटिव प्रोनाउन. सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको ऑलरेडी फिल अप करके. आपको इसमें क्या करना है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स विद पर्सनल प्रोनाउन या तो फिल करना है, या फिर पॉजिटिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज करना है. मेंशन देयर antecedents to. So here dear स्वास्तिका. So स्वास्तिका को संबोधि ने ये लेटर लिखा है. So dear स्वास्तिका, thank you for inviting me to your birthday next Sunday. So यहाँ पे जो है संबोधि जो है स्वास्तिका को थैंक यू बोल रही है कि स्वास्तिका का बर्थडे है तो उसने इनवाइट किया है संबोधि को, तो उसने बोला है थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. अब यहाँ पे एंसेडर कौन है, स्वास्तिका, क्योंकि उसको लेटर लिखा जा रहा है. एंड मी यहाँ पे कौन है, संबोधि, जिसको इनवाइट किया गया है. अ फ्रेंड ऑफ माइन इज गोइंग टू विजिट यू नेक्स्ट वीक. सो अब यहाँ पे माइन लिखा, तो माइन मीन्स संबोधि की बात हो रही है. एंड विजिट यू नेक्स्ट वीक. अब यू कौन है यहाँ पे, अगेन स्वास्तिका इज हियर. So we are going to write here swastika again. So children, like we have done a few of the examples here, like this you have to complete the rest of the exercise. Next is demonstrative pronoun. अब demonstrative pronoun क्या होते हैं, वो pronoun होते हैं जो किसी भी चीज को आप demonstrate करते हैं, इशारा करके बताते हैं. This, that, these, those, ये जो 4 words है ये demonstrative pronouns होते हैं. So demonstrative pronouns such as this, that, these, those are used to point out the specific thing they refer to. So किसी particular thing की तरफ ही इशारा करके बताते हैं कि this या that या these या those. Now read the passage below and notice the use of demonstrative pronoun in it. These are the gifts that my aunt gave me last year. So ये जो मेरे पास रखे हुए जो ये गिफ्ट है, बहुत सारे जो गिफ्ट है ये कौन लाया, मेरी आंट लाई. सो दीज हम यूज करते हैं पास की रखी हुई बहुत सारी चीजों के लिए. दैट इज द बॉक्स इन विच माई आंट बॉट ऑल दैट दीज गिफ्ट्स. सो दैट इज द बॉक्स, वो रहा वो बॉक्स, वो एक बॉक्स की बात हो रही है यहाँ पे. सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दैट, और दैट हम यूज करते हैं दूर की चीज के लिए. सो वो बॉक्स है जिसके अंदर ये सारे गिफ्ट्स. माई फेवरेट अमंग These is the diary of the Juvera. So इन सब के बीच में जो मेरी फेवरेट गिफ्ट है वो है डायरी. So these, इन सारे गिफ्ट्स में से उस एक डायरी की बात है. You must read this. So इसे पढ़ो. The above words in bold replace or point towards the noun and are called demonstrative pronouns. Now remember that this, that, these, those are also used as demonstrative adjective. अब इन्हें तो हम demonstrative adjective में भी यूज करते हैं. और determiners, when these words qualify noun, they play the role of demonstrative adjective. So जब ये noun के को qualify करते हैं तो ये demonstrative adjective बन जाते हैं. Examples are given here. I like the color of this dress. Here this is used to demonstrate adjective. अब आप देखोगे जब आप इस सेंटेंस को ध्यान से, I like the color of this dress, तो this के बाद dress word लिखा है, इसका मतलब dress एक noun है. तो जब भी noun से पहले this, that, these, those आए तो adjective की बात हो रही है, demonstrative adjective की बात हो रही है. अब let's look at the another example. This is the dress that I wish to buy for my birthday. So अब यहाँ पे this is the dress. dress और this में कितना डिफरेंस है, बहुत दूरी है. so यहाँ पे this के just बाद dress नहीं आया है, इसका मतलब ये demonstrative pronoun है जो demonstrate कर रहा है कि this is the dress, यही वो dress है जो मैंने अपने बर्थडे के लिए खरीदी थी. Now fill in the blanks with demonstrative pronoun and demonstrative adjectives. Mention next each blank the type of the word you have chosen. So this is my book and that book belongs to Smriti. So ये मेरी बुक है this, and that book, वो बुक जो है स्मृति की.
डैश लाइंग इन द कॉर्नर ऑफ आर स्वाति's बुक्स, बहुत सारे बुक्स की बात हो रही है. सो दोज लाइंग इन द कॉर्नर, वो जो कॉर्नर में रखे हुए हैं वो किसकी हैं? वो स्वाति की बुक्स हैं. So children, we have done the first rest questions. You have to do like this. Next is interrogative pronoun. अब interrogative pronoun क्या होता है? Interrogative pronoun such as who, whose, which and what are used to ask question. So ये pronouns use होते हैं questions को पूछने. Now look at the use of interrogative pronoun in the following sentences. Who is the Prime Minister of India? Who is this? What does your father do? अब यहाँ पे भी हमें सेम चीज फॉलो करनी जैसे हमने अभी डेमोन्स्ट्रेटिव में फॉलो की थी कि who के अगर जस्ट बाद में हमें नाउन मिलता है सो वो हमारे एडजेक्टिव हो जाते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं who के बाद प्राइम मिनिस्टर कितनी दूरी पे है या what के बाद फादर कितनी दूरी पे है. सो यहाँ पे ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन का वर्क कर रहे हैं. Now fill in the blanks with appropriate interrogative pronouns. Who wants to work on this mathematics project? Dash is the medium of instruction in your school. So what is the medium of instruction in your school? And dash is the owner of this pen. Who is the owner of this pen? So children, we have done 3 rest questions. Your homework you have to do on your own. Now let's come to the reflexive pronoun. So reflexive pronouns such as myself, herself, yourself, itself always refers to the subject in the sentence. So ये subject के बारे में बताते हैं. Reflexive pronouns are used when the subject and the object refer to the same person. So reflexive pronoun जो है subject और object जब दोनों एक ही person के बारे में बात कर रहे हो तब हम इन्हें use करते हैं. Now look at the use of reflexive pronoun in the following sentences. Zebra managed to save herself. Please help yourself. अब यहाँ पे प्लीज है, आपको पता है कि प्लीज हम कब यूज करते हैं जब हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं. सो सामने वाले को रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे यू लिखा है. सो यू हमारा सब्जेक्ट है. सो यू को ही हम बोल रहे हैं कि अपने आप को हेल्प करो. यू वी मस्ट मूव आवरसेल्व्स ड्यूरिंग द क्राइसिस. सो वी मतलब हम खुद की बात करें तो हम खुद के लिए हमने यहाँ पे आवरसेल्व्स यूज किया है. Now in the above sentences, the pronoun herself, yourself and ourselves refers to zebra, you and we respectively. Now look at the following table for the different forms of reflexive pronoun. यहाँ पे person दिया गया है first, second, third person, number दिया गया है and the gender. So सब चीजें equal होनी चाहिए. यहाँ पे personal के लिए हम use करते हैं I, you, he, she, it and one. रिफ्लेक्सिव में हम यूज करते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और वन सेल्फ. पर्सनल में हम दोबारा यहाँ पे यूज करते हैं इन द प्लूरल फॉर्म वी, यू, दे. अब रिफ्लेक्सिव में हम वी के लिए यूज करते हैं आवर सेल्फ, यू में योर सेल्फ एंड दे में देम सेल्फ. अब मास्कुलिन में हम इन सबको यूज कर सकते हैं. अब फेमिनाइन में हम इनको यूज कर सकते हैं जिनके सामने टिक लग रहा है. न्यूटर में हम सिर्फ इट को यूज कर सकते हैं. सो यू हैव टू लर्न दिस टेबल चिल्ड्रन. Now, emphatic pronouns are used to put emphasis on a subject. So, emphatic pronouns भी होते हैं जो किसी subject पे किसी चीज के ऊपर emphasize करते हैं. Their form is the same as that of the reflexive pronoun. So, reflexive pronoun की तरह ये होते हैं. Gayatri herself did the work within an hour, and you yourself checked this in the morning. अब आप देख सकते हो कि you और yourself एक साथ लिखे हुए हैं. So ये क्या है? emphatic pronoun. अब यहाँ गायत्री और herself दोनों एक पास लिखे हुए हैं. मीन्स गायत्री के लिए herself यूज हुआ है, दोनों एक साथ लिखे हुए हैं. So यहाँ पे ये हमारा emphatic pronoun है. In the above examples, word herself and yourself are used to put emphasis on the jaw of the action. So जो action को कर रहा है उसके ऊपर emphasize डाला गया है. That is the subject. Next is distributive pronoun. अब distributive pronoun क्या है? Distributive pronouns such as each, either and neither refers to person or thing taken as a unit. So distributive pronoun क्या कहता है? Distribute करता है. इसके नाम से हम समझ सकते हैं कि ये किस पे फोकस कर रहा है? ये each पे, either पे या फिर neither पे फोकस कर रहा है. तो जिन भी sentences में आपको ये मिलेंगे, this means they are using distributive pronoun.
Now look at the use of distributive pronoun in these sentences. Each of them took turn to help out with the project. Either of you can take the free passes for the shadow. Neither of you is allowed to go out till you finish your meal. So in all these sentences, we have used each, either and neither. Next is indefinite pronoun. अब indefinite pronoun क्या होता है? आप नाम देखो, नाम में लिखा है definite जो नहीं हो उसे indefinite कहते हैं. Means वो किसी particular चीज के बारे में बात नहीं कर रहा है. So indefinite pronouns such as something. Something मतलब कुछ भी हो सकता है. Someone कोई भी. Somebody कोई भी. Anything, anybody, nobody, all, none, some, several, few, and many. Any, many, other, everyone, anyone, nothing refers to person or thing in a general. So इसमें कोई भी specific person या thing की बात नहीं हो रही, कोई भी हो सकता है वो. These things are not defined, specified or exact. So ऐसी चीजें ना तो define है, ना specify की जा रही है और ना ही ये exact होती है. Now look at the use of indefinite pronoun in the following sentences. So indefinite pronoun के कुछ uses दिए गए हैं. Let's see. Somebody has left the door open. Few escaped punishment that morning. So here somebody and few are used as indefinite pronoun. These highlighted pronouns do not refer to any specific person or thing. So ये जो चीज है यहाँ पे किसी specific person या फिर thing को specify नहीं कर रही है. Now here we have to fill in the blanks with the appropriate reflexive pronoun, distributive pronoun or if indefinite pronoun. So does anyone want a cup of hot tea? I must get myself a cup. So here we have written myself कि किसी को चाय या कॉफी चाहिए, cup of hot tea चाहिए, मैं तो अपने लिए बनाने जा रही हूँ. I must get myself a cup. Next is Sunita is always looking at dash in the mirror. Do you also look at dash when you are alone? So Sunita की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे again we are going to use reflexive pronoun. Sunita is always looking at herself in the mirror. Do you also look at yourself when you are alone? तो you की बात हो रही तो yourself आएगा. So children, we have done 2 questions here, and the rest questions are your homework. You have to do it. Now, the next type of pronoun that we are going to learn is relative pronoun. means जो किसी चीज से relate करता है ऐसा pronoun. So relative pronouns such as who, which, that, whom, whose, what link a phrase or clause to another in a sentence. So ये जो pronoun होते हैं ये इन चीजों पे emphasize करते हैं और इनके बारे में हमें बताते हैं. Now look at the use of some relative pronouns in the following sentences. The boy who came with my father yesterday is my brother. So अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? उस बॉय की बात हो रही है जो मेरे फादर के साथ आया था. So रिलेशन क्रिएट किया जा रहा है, यहाँ पे रिलेट किया जा रहा है. प्लीज रीड द पोम which Wordsworth wrote. So यहाँ पे भी अब रिलेट किया जा रहा है पोम को वर्ड्सवर्थ से. The airbus has that landed just now came from London. अब एयरबस को उससे रिलेट किया जा रहा है जो उस अभी आई हुई है. This is the man whose music album sells worldwide. The student whom you sent last week is brilliant. So compound words such as whoever, whomsoever, whatever, whichever are also examples of relative pronoun. So ये सब जो यहाँ पे words लिखे हैं ये भी relative pronoun के examples हैं. Now join these set of sentences with relative pronoun. So यहाँ पे कुछ sentence के set दिए गए हैं. We have to join them with relative pronoun. So here the first sentence is the boy arrived late. He was scolded by his teacher. So here the sentence will be the boy who arrived late was scolded by his teacher. Next is the tiger was pursuing a buck. The buck was injured. The tiger was pursuing a buck which escaped, which was injured. So these are some of the examples. There are some of the questions that we have done. Rest you have to do on your own. Now let's do more
Fill in the blanks choosing the appropriate word from those given in the bracket. Dash in the your opinion is the most talented among these young musicians. So, who in your opinion is the most talented musician? So here you who will come. So children, like this you have to complete the rest of the exercise. So children, now we have come to the end of the chapter and we have already completed it. If you have any queries related to the chapter, you can ask me, and you have to complete the given exercises in your book, and I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay lit.